Hello students, welcome back again in your channel that is Kiran Biology, and today we will start the chapter 3, that is the human reproduction of class 12. So without wasting the time, let's start the chapter. Yes students, so as you are aware that humans are sexually reproducing and viviparous. It means हम लोग जो है एज अ ह्यूमन बींग्स कौन सा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्ट करते हैं, दैट इज सेक्सुअल। और हम लोग यहाँ पर विविपेरस हैं बिकॉज विविपेरस मीन्स वो एनिमल्स जो डायरेक्टली यंग वन को बर्थ करते हैं। तो हम लोग भी उसी एनिमल में से एक हैं। तो द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन, जो हमारे ह्यूमन बींग में जो कंप्लीट रिप्रोडक्शन का जो फेज है ना, हम उसे यहाँ पे कुछ सेवरल इवेंट्स में हम इसे आराम से डिवाइड इजीली कर सकते हैं फॉर द स्टडी। तो इट इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इट मींस द फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, isn't it? Because as we know that to do the sexual reproduction we need gametes, and for the gametes it must be formed inside the body. So this is the first stage, that is the gametogenesis. That is the sperm in males and ovum in females. It means obviously when we will study the gametogenesis, we will talk about the two types of gametogenesis. One in the male body, that is formation of sperms, that is spermatogenesis, and the another in the female body, that is formation of ovum, that is oogenesis. After the gametogenesis, the next step is the transfer of sperms into the female genital tract, and this is said to be insemination. So this is insemination. Now see in the next, after the insemination, the fusion of male and female gametes, that is the fertilization. We know very well the fusion of male and female gametes is basically fertilization. So fertilization leads to the formation of or development of a zygote. Now after the formation of zygote, what happens? क्या होती है इसके बाद? तो इसके बाद ये जो जायगोट होते हैं ना, इट इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये जायगोट की अलग अलग स्टेजेस है जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट यहाँ पे जायगोट बना, फिर जायगोट में आपका ये 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर आपके 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, यानी यहाँ पे मोरुला स्टेज आपको देखने को मिलेगा, ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर बेसिकली फीटस एम्ब्रायो बनेगा, फीटस बनेगा, है ना। इस तरह से अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे बनेंगे। So when the blastocyst develops, then its attachment must be there, and this attachment to the uterine wall is known as the implantation. So again, the next event is important one, implantation. So implantation is very important for the further embryonic development. So after implantation, as the implantation completes, then the embryonic development starts, that is the gestation or the gestation. After it, the last one, the delivery of the baby, that is the postulation will come. Yes. So what are the basic events that we have seen, the students? So the basic events that we have seen or we will study in this chapter. The first one, first of all, we will study the gametogenesis, then the insemination,
Then after insemination, the fertilization, and after that, that is the placentation, you can say, or before this implantation must be say. So after fertilization, and you can also say that when the zygote is formed as a result of fertilization, it undergoes the repeated mitotic divisions. So better to write here. We will talk about cleavage also. Cleavage. Cleavage. That is the mitotic divisions, but not exactly same. And during the cleavage, the different stages will come. बहुत सारे अलग अलग stages बनेंगे. Number of cells will increase. Number of cells increase करेंगे यहाँ पे. Then the implantation. So now better to write implantation. So then we will talk about the implantation. After implantation, the formation of placenta, that is the placentation. We will talk about the different types of placentation. Then, after placentation, the organ or gestation, means gastrulation, better to say gastrulation. It means basically the germ layers are formed, the gastrulation process, then the organogenesis, and finally the parturition comes. Parturition comes. So these are the steps: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are the 9 important events that we are going to study in this chapter, and these are in the sequence form. Okay. Now see the list next. Now you have learned that these reproductive events occur after the puberty. It means now the question is, when these events believed to start in the male body, ये मेल बॉडी में किस समय ये स्टार्ट होती है? There must be some particular age where it starts or these start. So that is the puberty. It means after the attainment of puberty age, the body is ready to fertilize, the body is ready to reproduce. So it starts after the puberty. Now, there are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. जो भी हम लोग यहाँ पर इवेंट्स देख रहे हैं ना, ये इवेंट्स मेल और फीमेल बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट होती है. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन. जैसे कि अगर हम स्पर्म गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन की बात करेंगे इन द मेल बॉडी, देन हम लोगों को क्या देखेंगे ना कि एक मेल बॉडी में जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस एक बार स्टार्ट हो जाती है, स्पर्म फॉर्मेशन होना, तो ये उसके ओल्ड एज तक कंटिन्यू रहती है. वहीं पर ठीक है, दूसरे तरफ अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन द फीमेल बॉडी, तो ये सेम नहीं मिलेगा. बिकॉज इन फीमेल बॉडी इट सीजेज, ये रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है. कब? जब उस वुमेन में एज जो है ना 50 ईयर्स के आसपास आ जाती है. इसका मतलब हमने क्या देखा कि पर्टिकुलर एज पीरियड में वो वुमेन जो है ना उसमें ओवम बनना बंद हो जाती है. तो इस तरह से और बहुत सारे आपको कुछ रिमार्केबल डिफरेंसेस नजर आएंगे, जबकि इवेंट्स सेम है कुछ कुछ वहाँ पे, और वो इवेंट्स जो है ना वो थोड़ा अलग तरीके से होंगे. So let us examine the male and female reproductive system in human first. या ऑब्वियसली क्योंकि पहला स्टेप हम लोगों का क्या है? पहला स्टेप हम लोगों का है गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस. और हम लोगों को ये पता है फॉर द गैमेट्स वी नीड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑर्गन तो होगा ना जो बेसिकली गैमेट्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखेंगे. तो यहाँ पे ये रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है ना, यहाँ पर ये 2 कैटेगरीज में है. पहला एक मेल बॉडी के लिए, ठीक है, एक पहला हो गया मेल बॉडी के लिए.
तो मेल बॉडी के लिए हम लोग पहले देखेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो मेल बॉडी या फीमेल बॉडी, जो भी बॉडी है, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, हम ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दो कैटेगरी में हम यहाँ पर रख सकते हैं। Since these are divided into two groups, one is basically known as the primary sex organ और primary reproductive organ। वहीं पर हम दूसरे कैटेगरी की बात करें, that is the secondary sex organ या फिर secondary reproductive organ। Now the next question, what are these? आखिर ये है क्या? कौन से ऑर्गन मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? सेम यहाँ पर कौन सा ऑर्गन मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, और कौन कौन से आपके ऑर्गन फीमेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है? तो यहाँ पे जो भी ऑर्गन है प्राइमरी ऑर्गन कौन होंगे? तो हम कह सकते हैं कि ऐसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन which is responsible for the formation of gametes. It means gamete formation, gamete formation। यहाँ पर वे ऑर्गन आते हैं जो मेनली गैमेट्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो मेल एग्जाम्पल में अगर हम मेल बॉडी की बात करें, तो मेल के बॉडी में वो ऑर्गन कौन होंगे जो बेसिकली गैमेट यानी कि स्पर्म का बनाने का काम करते हैं? तो दैट इज द टेस्टिस। So it means these testes will be known as the primary sex organ in case of male body। Similarly, अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करेंगे, तो इन फीमेल बॉडी what is the organ which basically produces the gamete? That is the ovaries। तो यहाँ पर हम इस ओवरीज को फीमेल बॉडी का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। बट अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो दे डू नॉट प्रोड्यूस द गैमेट, ये गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दे डोंट प्रोड्यूस एनी गैमेट। तो जब ये गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते तो फिर करते क्या है? तो ये बेसिकली कंडक्ट करते हैं, ये हेल्प करते हैं या असिस्ट करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के, यानी कि दे इन्वॉल्व इन कंडक्शन, दे कंडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं, दे कंडक्ट द गैमेट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर एग्जाम्पल, हम मेल बॉडी की बात करें, तो मेल बॉडी में टेस्टिस को छोड़कर बाकी जितने सारे ऑर्गन्स होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एक्सेसरी डक्ट्स हो गए, जैसे वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आ जाएंगे। इवन एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, जो तीन ग्लैंड्स हम लोग पढ़ेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, कॉपर्स ग्लैंड, दे ऑल आर secondary sex organ। Even the male copulatory organ, that is the external genitalia, that is the penis, also is the secondary sex organ in male। अब यही अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें, तो फीमेल बॉडी में ओवरीज को छोड़कर आपका यूट्रस जो है, ठीक है, यूट्रस, ये क्या हो गए? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए। आपके ओविडक्ट क्या हो गए फीमेल की? ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए। और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन होंगे जो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएंगे। Now there is one more function of the primary sex organ apart from the gamete formation. What is that? तो ये नेक्स्ट जो आपका देखेंगे ना, वो ये है कि दे सिक्रीट हार्मोन ऑल्सो। ये ना हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं, ये हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। जैसे कि आपका टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? तो मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और ये ओवरीज कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर दिए? तो एक हो गया आपका एस्ट्रोजन, एक हो गया एस्ट्रोजन, और सेकंड हो गया प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों तरह के हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं दे डू नॉट, तो डू नॉट सिक्रीट एनी काइंड ऑफ हार्मोन।
ये किसी भी तरह के हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करते हैं। तो these are the few differences between the primary sex organ and the secondary sex organ। और यहाँ पर एक और चीज आप देखेंगे कि ये जो डुअल फंक्शन हो गए हैं, पहला आपका हो गया गैमेट का फॉर्मेशन करना और सेकंड हो गया आपका हार्मोन का सिक्रीशन करना। हम इसी के वजह से, इस ड्यूअल फंक्शन के वजह से हम एक नया वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द गोनाड। So it means what is the male gonad? That is the testis. What is the female gonad? That is the ovaries. ठीक है? So in this chapter, first we will talk about the male reproductive system, in which we will talk about the testis that occurs in a pair, along with some accessory ducts, glands, and external genitalia. So the accessory ducts includes vas deferens, then epididymis, and many more. Glands. Actually, it includes three types of glands. One is the seminal vesicles, prostate gland, and Cowper's gland, also known as the bulbourethral gland. External genitalia. It includes the penis, that is male copulatory organ. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही जानेंगे, दैट इज द डिवीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेस्टिस जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और मेल गोनाड है, तो वी विल डू दैट। ठीक है? तो बाय द टाइम जस्ट वॉच इट एंड इफ यू लाइक देन शेयर इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।